This is Akashvani. The National Human Rights Commission, NHRC India, in collaboration with the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, will host the 28th Annual General Meeting and Biennial Conference of National Human Rights Institutions at Vigyan Bhavan, New Delhi on 20th-21st September 2023. In connection with this event, we now bring you an interview with Chairman, National Human Rights Commission, India, Honorable Justice Arun Mishra, first in Hindi and then in English. The interviewers are Manoj Mainkar in English and Nisha Bharadwaj in Hindi. नमस्कार, आदरणीय न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी, इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। ये समय भारत की विकास गाथा का एक ऐसा दौर है जो नित नए अध्याय जोड़ रहा है। हमारे श्रोताओं की ओर से मैं निशा भारद्वाज आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सर, हम सभी को ये एहसास है कि इन दिनों पूरा विश्व भारत को उम्मीदों के साथ निहार रहा है। चंद्रयान 3, आदित्य L1 और अभी संपन्न हुए G20 का भव्य और सार्थक आयोजन और अब देश के समक्ष एक और सुनहरा अवसर दस्तक दे रहा है, वो भी एक ऐसे क्षेत्र में जिसका सीधा संबंध पृथ्वी के हर जीव की गरिमा के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, यानी मानवाधिकार। आज की इस बातचीत में हम इस विशेष इवेंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि मानव विकास के आरंभिक इतिहास में, विशेषकर हमारी प्राचीन सभ्यता में, मानवाधिकार जैसे अहम मुद्दे को किस तरह से रेखांकित किया जाता रहा है। हमारे यहाँ प्रारंभ से ही संस्कृति में और हमारे समाज में मानवाधिकारों को प्रमुख स्थान दिया गया है। जैसा कि हमारे वेदों से स्पष्ट है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, सबकी निरोगी काया रहे, किसी को कोई दुख ना हो, वो सभी को सब सुख प्राप्त हो। ये हमारी परंपरा है। हम जिस नींव पर खड़े हुए हैं वो है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। ये जो हम आज वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये कोई नया संकल्प नहीं है। ये भारतीय परंपरा में, वेदों में इसकी परिकल्पना की गई है। भारत पूरे विश्व का एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। नालंदा में जो विश्वविद्यालय थे और अन्य यूनिवर्सिटीज थी, उनमें अगर आप देखें तो 10,000 विद्यार्थी एक समय में पढ़ते थे। प्रकृति के संबंध में आज हम अगर सोचें तो उस समय हमारे यहाँ तो इवन कॉस्मिक बैलेंस, जो प्रकृति से नहीं, पूरे ये जितने सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, इन सब से एक हमारे यहाँ रिश्ता बनाकर रखा गया है। चंद्रमा को मामा माना गया। इसी तरह से अगर आप और देखें तो वृक्षों को हमारे यहाँ पूजा जाता है, गाय को और इनको हमारे यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गंगा जीवन दायिनी, लाखों लोगों की जीविका चलती है और वाटर बॉडीज का इनका प्रोटेक्शन करना ये महत्वपूर्ण था। अगर हम हमारे यहाँ देखें तो अशोक जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बने कलिंग विजय के पश्चात, उन्होंने अपने यहाँ वृक्षों काटने पर रोक लगा दी थी। कोई जंगल को नष्ट नहीं कर सकता था। इकोलॉजिकल बैलेंस की बात अगर आज जो करते हैं तो अगर हमारे यहाँ देखें तो काफ़ी श्लोक हैं। पृथ्वी सूक्त में इस श्लोक आते हैं कि पृथ्वी में जो मिनरल्स हैं, जो धातुएं हैं, उनकी संरक्षण होना चाहिए, उनका दोहन अधिक नहीं होना चाहिए, उनकी संरक्षण करना हमारे लिए ज़रूरी है। और इस प्रकार से एक तरफ विकास, दूसरी तरफ इनका संरक्षण, ये आगे वाली जो आगे हमारी पीढ़ियाँ आएंगी उनके लिए आवश्यक है कि हम इनको संरक्षित भी करें। इन सब के संबंध में हमारे यहाँ काफ़ी साहित्य में, वेदों में मिलता है। ऋग्वेद में ये लिखा है कि अजेष्ठ्यासु अकनिष्ठा से ये थे, कोई छोटा बड़े में कोई भेद नहीं है, सब बराबर के हैं। हमारे यहाँ परिकल्पना प्रारंभ से रही है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो न रवसी नरक अधिकारी। वो जो राजा के जिसमें प्रजा दुखी है उसको सिर्फ नरक का ही अधिकार है, और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। हमारे यहाँ शुरू से की परिकल्पना है। और कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी लिखा है कि लोकतंत्र का जिस समय कार्य हो तो उस समय विश्राम का कोई स्थान नहीं है। धर्मो रक्षिता रक्षिता, धर्म से ही रक्षा है हमारी।
और अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ऋग्वेद में भी ये भी लिखा संगच्छत्तम संवद्भवम सम वो मनांसी जानताम देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते। तो सब लोग एक साथ मिलकर चले, सबके हृदय एक हों, सबके विचार एक हों और हम सब एक साथ चल के प्रकृति करें। ये हमारे यहाँ का एक ऋग्वेद का सिद्धांत है 5000 वर्ष पूर्व से। और हम तो इस बात पर भरोसा करते, रामायण में जैसा कहा गया है परिस सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो हम दूसरों की पीड़ा और परोपकार में विश्वास करने वाले संस्कृति के इस देश को निश्चित तौर से यह जो आज स्थान प्राप्त हुआ है हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता की वजह से, और ये हमारी एक शक्ति रही है कि हमने विभिन्न धर्मों को अपनाया, सारे लोगों को अपनाया और एक ऐसी सभ्यता बनाई है जिसको कि विश्व में एक अनूठी सभ्यता है जिसमें कि एक अनेकता में एकता है। सर, ये जो द्विवार्षिक कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन की मेजबानी भारत कर रहा है, इस आयोजन की आवश्यकता और महत्व के बारे में हमारे सभी श्रोता जानने के लिए इच्छुक हैं, आप बताएं। पहले सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन में 5 देशों ने अपने यहाँ ये संस्थाएं बनाई, बाकी देशों में संस्थाएं नहीं थी। आज ये खुशी का विषय है, भारत ने प्रस्ताव किया था इसके निर्माण के संबंध में और भारत इसमें एक विशेष योगदान, आर्थिक योगदान भी देता है इसके कार्यकलापों को चलाने के लिए प्रतिवर्ष का। और ये खुशी की बात है कि आज 31 देशों में ये संस्थाएं बनाई गई हैं जिसमें से 26 को रिकॉग्निशन मिला हुआ है, बाकी को अभी वो अपने यहाँ जो संयुक्त राज्य संघ ने जो सिद्धांत बनाए हैं उनके आधार पर प्रयास कर रहे हैं उनके यहाँ संस्थाएं शीघ्र बने जो कि पेरिस प्रिंसिपल के अनुसार हों। इसी विषय पर हम आगे बात बढ़ाते हैं। जो 20 और 21 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विशेष आयोजन होने जा रहा है, इसमें कौन कौन से देशों के प्रतिनिधि आएंगे और क्या क्या सत्र होंगे? इसमें 30 से 31 देशों से लोग आ रहे हैं, 97 के लगभग डेलीगेट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ। उसके अलावा जितने एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ये भी उसमें आमंत्रित हैं। हमारे यहाँ के जो स्पेशल राज्य के में जो कमीशन आयोग बने हुए हैं सभी राज्यों में, उनको भी आमंत्रित अध्यक्षों को और सदस्यों को किया गया है और इसमें सभी देशों से लोग आ रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य संघ की जो गैलरी में जो है, इसके अलावा कमिश्नर ह्यूमन राइट्स के जो जिनेवा में हैं वो भी इसके भाग लेंगे। सेक्रेटरी भी गैलरी से जो जिनेवा से यूनाइटेड नेशन से इसमें भाग लेंगे। इस प्रकार से ये एक तरह से एशिया पैसिफिक के अतिरिक्त इसमें विश्व के अन्य जो महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं वो भी भाग लेने आ रहे हैं। और इसमें हमारे विभिन्न सेशनों में सबसे पहले सेशन में तो ये डिस्कस किया जाएगा कि हमारे 30 वर्षों में जो पेरिस प्रिंसिपल्स के बाद नेचराइज बनना शुरू की, हमारी यात्रा में हम कहाँ पहुँचे और वर्तमान में हमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या हमारे सामने जो कठिनाइयाँ हैं जो कि ह्यूमन राइट्स का जो मानव अधिकारों का उल्लंघन है, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना है, उसके लिए क्या संयुक्त रूप से हमें एक अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, एक उसको किस प्रकार से मानव अधिकारों का उल्लंघन रोका जाए, इस पर विचार विमर्श करेंगे। जो तथा पर्यावरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है इसमें, क्योंकि जो पर्यावरण और जो बदलाव मौसम में आ रहा है इसकी वजह से काफ़ी सूखे की स्थिति, कहीं बाढ़ की स्थिति, कहीं पर अतिवृष्टि और कहीं गर्मी बढ़ रही है, कई देशों में समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जल का स्तर बढ़ रहा है, कई परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। तो इसके लिए एक सारे देशों को मिलके एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इसके साथ साथ हम इस पर इन कई सेशन में ये भी विचार विमर्श करने, ये भी प्रश्न उठाने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से जो इंटरनेट का जिस प्रकार से उपयोग हुआ वो एक अच्छे काम के लिए जनित हुआ, परंतु उसका 96% जो उसका उपयोग हो रहा है वो उसके अपराध के लिए, डार्क वेब के संबंध में आपराधिक गतिविधियों के लिए उपयोग हो रहा है। तो उसमें हमें अपने बच्चों का जो यौन शोषण का उसमें प्रमुख मुद्दा है, तथा उससे जो व्यक्तियों की खरीदा बेची हो रही है, उनको इंटरनेट पे जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उनका पर्सनल डेटा हैक कर लिया जाता है, फिर उनसे रैंसम मांगी जाती है, इवन देशों से रैंसम मांगी जाती है और सेंसिटिव डेटा उसमें से हैक करने के पश्चात और भी अन्य प्रकार के साइबर क्राइम्स उस पर घटित हो रहे हैं। ई कॉमर्स एक हमारे यहाँ एक ऐसा
ग्लोबलाइजेशन के पश्चात, वैश्वीकरण के पश्चात अब उससे पीछे हट नहीं सकते हम। इंटरनेट अच्छी चीज़ है, परंतु इसको हमें एक जॉइंट स्ट्रेटजी ये बनानी पड़ेगी। जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उस पर कंटेंट्स लोड कर रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस पर हमने एक कॉन्फ्रेंस भी की थी नेशनल सीसेम, बच्चों का यौन शोषण कैसे रोका जाए, इंटरनेट पर जो हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं तथा इस पर विचार विमर्श करेंगे इसको सभी देशों को, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर विश्व में किसी भी कोने से दूसरे देश में ये अपराध होते हैं। आगे के परिप्रेक्ष्य में कैसे इस दिशा में अग्रसर होना है, दिशा निर्देश मिलकर बैठ के शामलाती तौर से बनाने पड़ेंगे, जिससे कि मानव अधिकारों का उल्लंघन इंटरनेट पर रोका जा सके। और इसके संबंध में हमें ये आवश्यकता है कि हम साइबर एथिक्स को और अधिक विस्तार से लोगों को जानकारी दें, उनकी सिक्योरिटी कैसे, उनकी संरक्षण कैसे होगा साइबर स्पेस में, क्या क्या उपयोग करना चाहिए। और हमें ये भी आवश्यकता है कि हम डिजिटल फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी की और अधिक संख्या बढ़ाएं तथा उसको और अधिक प्रभावी करें। ये सब आवश्यकता, इन सब पर मैं सोचता हूँ कि नए नए जो एक आयाम सामने आ रहे हैं अपराधों के, इन सबको रोकने के लिए संयुक्त विचार विमर्श आवश्यक है। सर, एक और संयोग पर बरबस मेरा ध्यान चला गया, जो कि मैं आपसे भी साझा करना चाहती हूँ। हमारे अपने मानवाधिकार आयोग को भी अस्तित्व में आए 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संयोग है कि पेरिस प्रिंसिपल्स को भी इतने ही वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन दोनों के सार को परस्पर आलोक में कैसे देखा और समझा जा सकता है? ये दोनों परस्पर एक दूसरे पूरक है, क्योंकि जो पेरिस प्रिंसिपल्स बने थे उसमें ये अपेक्षा की गई थी कि विभिन्न जो देश हैं पेरिस प्रिंसिपल्स के अनुसार जो अपने यहाँ मानवाधिकार आयोग बनाए, उसके अंतर्गत ये मानवाधिकार आयोग की स्थापना करने में भारत एक अग्रणी देश था। तो भारत ने जब इसमें प्राथमिकता हासिल की इसको बनाने में, तथा अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ इसका जो संरचना की गई है, बहुत ही शक्तिशाली तौर से हमारे मानवाधिकार आयोग को शक्तियाँ दी गई हैं। इसमें हमारे यहाँ एक अनुसंधान का एक पूरा विंग है, जिसमें कि डायरेक्टर जनरल पुलिस के रहते हैं, उस लेवल के ऑफिसर्स हैं, तथा उसमें कई डीआईजी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और अन्य इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉ विंग हमारे यहाँ कानून संबंधी कंप्लेंट्स डील करते हैं, उसमें भी काफ़ी विंग है। रिसर्च विंग हमारे यहाँ है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसमें विभिन्न विषयों पर स्टडी की जाती है तथा उसमें जो मानव अधिकार से संबंधित विषय हैं उनको हम प्रत्येक वर्ष रिसर्च को फंड भी करते हैं उनको, और अपने यहाँ उस पर विचार विमर्श करके आगे का भविष्य की योजनाएं तय करते हैं। सर, समय के साथ मानवाधिकार के बढ़ते दायरे में वैज्ञानिक सोच का शामिल होना एक हर्ष का विषय है। आपसे जानना यही चाहूंगी कि तेजी से बदलती इस दुनिया में कौन कौन से क्षेत्र जुड़ते जा रहे हैं? देखिए, एक तो वैश्वीकरण होने के पश्चात ये हो गया है कि मार्केट खुला हो गया है, और आप देखें तो ये एक देश में बैठकर दूसरे देश में बिजनेस किया जा सकता है। इंटरनेट पे बिजनेस हो गया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए इंटरनेट पे ही टैक्सी सर्विसेज भी चलती हैं। इंटरनेट पर ऐप के उस पे से आपके यहाँ सब सामग्री घर में आज पहुँच रही है। तो इसके साथ साथ जब ये वैश्वीकरण हो गया तो इसके पश्चात जो इसमें खामियां रह जाती हैं उसकी ओर दृष्टिगत करना हमें आवश्यक हो जाता है। एक तो हमें ये आवश्यक है कि जो व्यवसाय करना अपनी जगह उचित है, व्यवसाय का पारिश्रमिक भी प्राप्त होना चाहिए, परंतु साथ में जो एक ग्राहक है उसके भी अधिकारों की, और जो उसमें कर्मचारी संलग्न है उस व्यवसाय के साथ, तो इन दोनों में एक अति महत्वपूर्ण सामंजस्य आवश्यक है कि व्यवसाय को किस प्रकार से उत्तरदायी बनाया जाए कि वो कर्मचारियों का अपना मानवीय हितों की उनकी संरक्षा करें, उनकी देखभाल करें, उनका जो रोजगार है उस रोजगार सुरक्षित होना चाहिए उनके संबंध में उनको कल्याणकारी योजनाओं में उनको कवर करना चाहिए। इस समय अगर आप देखें तो हमने ट्रक ड्राइवर्स के संबंध में बिजनेस जो व्यवसाय को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए उसके संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि हमने ये कहा है कि ट्रक ड्राइवर्स को 15 लाख का कवर प्रोवाइड करना चाहिए ट्रक ऑपरेटर्स को। मैं ये भी कहा उनको स्वच्छ खाना प्राप्त हो, उनको अच्छे हॉल्टिंग प्लेसेस मिलने चाहिए, उनसे ओवर टाइम वर्क नहीं कराना चाहिए। इसी प्रकार से हमने एक अभी मेंटल हॉस्पिटल्स के संबंध में भी पूरे देश में हमने 47 मेंटल हॉस्पिटल्स का इंस्पेक्शन कराया,
हम कमीशन वाले 3 सारे सदस्य और मैं भी 3 अस्पताल देखने गए, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए तथा उनमें जो रोगी ठीक हो गए जिनको उनके घर वाले स्वीकार नहीं कर रहे, उनको वापस कैसे भेजा जाए, इसके संबंध में हमने अभी आदेश भी पारित किया, अभी कॉन्फ्रेंस भी की है और उसके संबंध में हम एक एडवाइजरी भी जारी करने जा रहे हैं। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस यौन शोषण पर बच्चों के आयोजित की थी तथा इसमें हमारा ये सोचना है कि ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस प्रकार से यौन शोषण को रोकें और जो साइबर क्राइम्स घटित हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस पे साइबर क्राइम्स नहीं होने चाहिए। इसके संबंध में भी एक एडवाइस जारी करने जा रहे हैं जो कि अंतिम स्वरूप हम उसको देने में लगे हुए हैं। तो ये प्रयास रहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी से जो विभिन्न प्रकार के अपराधों के प्रकार बदल गए हैं, आज जो अपराध पहले अन्य प्रकार से फर्जी चेक बनाने से, फर्जी दस्तखत बनाने से घटित होते थे, आज ई कॉमर्स पे जब हम आ गए, ई फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, ये सब हो रहे हैं। तो इसके संबंध में हमें चुस्त दुरुस्त रहना होगा। एक देश से होकर दूसरे देश का डेटा हैक किया जा सकता है, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श, सामंजस्य और इस अपराधों को समाप्त करने के लिए, इंटरनेट का दुरुपयोग रोकने के लिए हम सबको एक साथ चलना होगा तथा ये जॉइंटली एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिससे इस प्रकार के अपराध घटित ना हो। सर, जो विज्ञान भवन में आयोजन होने वाला है उसकी कार्य सूची पर सरसरी निगाह डाली जाए तो एक सत्र बहुत ही दिलचस्प प्रतीत होता है और वो है बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, व्यवसाय और मानवाधिकार। इन दोनों क्षेत्रों का आपस में क्या संबंध है? मानवाधिकार और बिजनेस एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, उसमें यूनियन कार्बाइड था जिसकी फैक्ट्री थी, उसमें 5,000 लोग की मृत्यु हुई। अगर आप देखें तो ये जो दुर्घटना हुई इसके लिए बिजनेस हाउस रिस्पॉन्सिबल था। आज अगर हम देखें तो उन्होंने अपने उस फैक्ट्री से उस समय का जो उनका मलबा आज तक पड़ा हुआ है उसको उन्होंने हटाया नहीं है और वो अपेक्षा करते हैं कि शासन उसको हटाए। फैक्ट्री मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की है, उन्होंने किसी और को बेच दी। अब आप अपने घर में से अपेक्षा करो कि शासन आपके यहाँ से मलबे को हटाए जो कि जहरीला मलबा है, जिससे कि वहाँ का ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन हो रहा है, सॉइल का कंटेमिनेशन हो रहा है। ये सब विषय हैं। बिजनेस हाउसेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ऐसी दुर्घटनाओं में, उनके ये भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जिस देश में व्यवसाय कर रहे हैं उस देश के प्रति उसमें से दोहन ना कर सके पैसे का। अपने यहाँ जो कर्मचारी कर रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करें उस देश के कानून के अनुसार, तथा वो जो अपेक्षाएं एक गरीब वर्ग को हैं वो पूरी होनी चाहिए, उनको भी इस वैश्वीकरण का लाभ प्राप्त होना चाहिए। और ये हमारे यहाँ धारा 135 कंपनीज एक्ट में बनाई गई है जिसमें कि बिजनेस को जो सामाजिक योजना है उन पे पैसा खर्च करना आवश्यक हो गया है। 2%, 2% ऑफ देयर प्रॉफिट सालाना जो लाभ कमाएंगे उसको खर्च करना चाहिए गरीबी उन्मूलन इत्यादि के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, पर्यावरण के संबंध में उनको खर्च करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी तरफ हमारे देश ने काम शुरू कर दिया है कि हम कैसे अपने जो हमारे यहाँ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं बायोफ्यूल के बारे में, बिजली से कल चलें इससे कि प्रदूषण कम हो, इसकी ओर हम लोगों ने आगे बढ़ा दिए हैं अपने कदम। तथा हमारे यहाँ जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इसमें सर्कुलर इकोनॉमी, इसका रिसाइकलिंग होना चाहिए, इसका पुनः इससे जो पार्ट्स ऐसे हैं जो कि अभी खराब नहीं हुए जिसमें लाइफ है उसका पुनर्उपयोग होना चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ जो मिनरल्स हैं एक्सट्रैक्शन, जैसे आयरन का एक्सट्रैक्शन कम होगा। आयरन बनाने में इतना पानी खर्च होता है, इतना प्रदूषण कारित होता है, वो सब इससे रुकता है। तो हमारे देश में इसमें नियम बना दिए गए हैं और वो नियम लागू भी कर दिए गए हैं। तो ये एक अच्छा परिप्रेक्ष्य कि हमने उस दिशा की ओर सिर्फ लक्ष्य निर्धारित नहीं किए पर हमने अपने प्रयास भी उस दिशा में जारी किए। सभी देशों को एक साथ प्रयास करना है और हम सबको भी इसमें, प्रत्येक व्यक्ति की इसमें सहभागी होना पड़ेगा। वृक्षों की रक्षा करनी पड़ेगी और जंगलें उनको और बढ़ाना पड़ेगा, उनकी कटाई बंद होनी पड़ेगी, उनका संवर्धन करने का बहुत आवश्यकता है, और जिससे कि हम ये अपने लक्ष्य को और अधिक शीघ्रता से पूरा कर सकते हैं अपने सार्थक प्रयासों द्वारा। जी सर, मानवाधिकार का प्रश्न हर किसी से जुड़ा हुआ होता है। शहरों में तो आए दिन इस विषय पर विचार और चर्चा, संगोष्ठी आदि जो है आयोजित होते रहते हैं, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों के लोगों का जुड़ाव बढ़ाने के लिए और युवाओं के बीच इसकी जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से आयोग ने क्या क्या कुछ नए कदम उठाए हैं इस दिशा में?
आयोग हमारे यहाँ तो अवेयरनेस सबको ज्ञान हो इसके संबंध में हमारे यहाँ एक इंटर्नशिप कोर्स भी हम करते हैं जो कि विद्यार्थियों के लिए ही है। तो इसमें हमारे यहाँ काफ़ी एप्लीकेशंस आती हैं, हम डिबेट कॉम्पिटिशंस करते हैं और तथा विभिन्न लॉ कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में और अन्य कॉलेज में अन्य स्थानों पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं मानवाधिकार संबंध के विषय में और अन्य विषयों पर भी करते हैं जो कि प्रासंगिक विषय हैं। समय अनुसार उन विषयों पर वाद विवाद आयोजित करते हैं और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहते हैं। पुलिस ट्रेनिंग हमारे यहाँ चल रहा है, ट्रेनर्स को हमने अभी ट्रेनिंग दी है। इस प्रकार से कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं तथा युवाओं के संबंध में नेहरू युवक केंद्र के साथ भी हमारा कार्यक्रम चलता है। वो हमारे बिहाफ पर काफ़ी आयोजन करते हैं, उसमें हमारा कोलैबोरेशन चलता है उनके साथ तथा इस प्रकार से हमारे पूरे देश में हमें युवाओं को लक्ष्य कर कर कि वो उनमें मानवाधिकार संबंध में जागृति पैदा होगी तो मानवाधिकारों का संरक्षण हमारे देश में और अधिक सम्यक रूप से हो सकेगा। तो हमारा लक्ष्य है इस ओर कि हम युवाओं को इसकी जानकारी दें, उनको जागृति करें तथा उनको ये पता होना चाहिए कि उनके संविधान में क्या लक्ष्य है। हमारे संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं वही मानवाधिकारों में हैं। जो हमारे संविधान में अधिकार हैं, जो राज्य के दिशा निर्देश सिद्धांत हैं, वही पेरिस प्रिंसिपल्स हैं, वही हमारे वेदों में है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी हमारे युवाओं को होना आवश्यक है जिससे कि देश और अधिक उन्नति शीघ्र करेगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन की मेजबानी के लिए आपको शुभकामनाएं। हमारा मानवाधिकार आयोग अपने प्रयासों में हमेशा सफल हो, प्रत्येक नागरिक के मानवाधिकार सुरक्षित हो और निश्चित हो, यही कामना है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम के लिए आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Namaskar. Respected Justice Arun Mishra, it is indeed a privilege and a pleasure to welcome you to this special program at a significant juncture in our nation's trajectory. I am Manoj Mindkar on behalf of our listeners. Sir, as all of us are aware, the entire world seems to be gazing at our country intently and expectantly. Chandrayaan-3 and G20 coming together have been some defining examples of the year 2023, literally and figuratively. And now, we are on the verge of being center stage once again on a subject that pertains to the dignity of every living being on the earth, and that is human rights. In today's conversation, we'd like you to elucidate the lineup of the special events at Vigyan Bhavan as our country plays host to the Conference of Human Rights Institutions of the Asia-Pacific region. But, sir, before we come to the point, may I request you to briefly draw a word sketch of the paradigm of human rights across millennia in this ancient civilization, just to give a sense of the essence of our ethos to the international participants in the conference, as well as listeners from other parts of the world who might be tuned in. Basically, if we go deep in the matter of our culture and philosophy with respect to the human rights, we have to consider this aspect first, that every person is born with the same dignity and same rights. He came with the same dignity which he is having today. At the time when the first man was born, were the same as they exist today. These are pre-existing rights. These are not granted by the law, not by the Constitution, nor by the Paris Principles, or by the United Nations Declaration on Human Rights. These are pre-existing rights. So, earlier when in our culture, civilization, you see, we have the scriptures of Rigved 5,000 years back. Sarve bhavantu sukhina is the concept. How everybody should be happy. Nobody should be ailing, nobody should be having any dukha. That is our concept of our culture deeply embedded. And then we have this concept of Vasudhaiv Kutumbakam. Globalization is, we feel that is a new concept. No. Vasudhaiv Kutumbakam was 5,000 years ago our concept. There was a right to go across the world freely. And the people from all over the world used to come to take education in India. Nalanda, Takshila and all those universities, there is number of students was one time 10,000, more than 10,000 one university. These were the places where education used to be imparted to the entire world. And we take pride that our culture indicate that everybody is equal. And then you see, Rigved says, Samani va akuti samana hridayani vah
Samanamastu itha vasuha sahasati. So everybody is equally born and let them work together. And Guru Nanak Dev also said that Manas ki jaat save eki pehchan wo. All human beings are same and equal. There is no difference between them. And Rigved also says that there is no difference of high and low in the society. It says, Ajyaschaso Agnisthasa ete sambhratro vabhradu saubhaya. सब बराबर है, किसी में ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं है हमारे यहाँ. So this is basically on which our entire culture has built up. We are the assimilation of different culture. Power of assimilation was our strength, not the weakness. So our culture is so much strong that it has tolerated every onslaught on it and rather assimilated good points of them, and then we are surviving as on today, and world is looking at us. And when we are organizing this conference, obviously it is not for the benefit of India but for the benefit of the entire humanity world over, particularly Asia Pacific also. These countries are participating in this conference. Chairperson sir, you described it so lucidly. Let us now share with our listeners the sequence of the segments of the special 2-day event, along with logistics and related historical insights. Actually, in Asia Pacific region, there used to be only 5 NHRIs, National Human Rights Institution, earlier in 1996. So these countries, Australia, India and 3 other countries, thought that there should be Asia Pacific region should have more NHRIs. So they thought that there should be NHRIs in various countries in Asia Pacific region, so that this forum was made. And India is contributing a very huge sum every year for Asia Pacific Forum. India was a founding member of Asia Pacific Forum, and now I am happy that 26 countries are having NHRIs, and in 6 countries NHRIs have been set up. They are in the process of establishing as per the expectations of the United Nations Assembly NHRIs. So they have not been accredited so far, but still they are in the process of building up. So we will have 31 countries over here, and then after formation of Asia Pacific Forum, India is in governing committee of the same, and then India is in governing committee of the GANRI also, which is the International United Nations body. So this is very important conference from the point of view of climatic change, and then you see discussing what we have achieved in last 30 years of Paris Principles. Under Paris Principles, India was the pioneer country to establish this NHRI, and we have statutory framework in our Human Rights Protection Act of 1993 that we have several independent wings, research wing, investigation wing, and then law wing, and then administrative wing also. And at the same time, in every state, India carved out in all the states that there should be one state human rights commission having the same power. So this special 2-day event, as we are expectantly awaiting it, it's going to happen at Vigyan Bhavan. It'll be nice if you tell us, a simple lineup of what all is going to happen, what kind of sessions are there, and when is this taking place? President is going to inaugurate on 20th. There will be annual general meeting. Day before that, there will be meeting of executive committee to carve out the strategy for the entire, and then pass certain resolutions. And then 2 sessions on 2 topics, climatic change, 30 years, and then what we are going to do further. And then 75 years of UDHR is also... That's the Universal Declaration of Human Rights. And then we are going to discuss such as cyber crimes which are on increase in the entire world. Without international cooperation and joint strategy, we are not going to solve this problem. Then child trafficking, we are going to discuss that how to create an infrastructure to prevent child trafficking. Business has to be made responsible. We are going to discuss business and human rights. So international cooperation, consensus and joint strategy, not only by the countries but all NHRI should work together to see that certain norms are
implemented with respect to the recent forms of commission of the crime, which has been invented now due to technological advancement. Now the customary nature of crime has changed totally. You just mentioned the Universal Declaration of Human Rights. At the moment, as the program is going on air, we do not know how many students are tuned in. So it will be nice if you, in simple words, tell us what exactly the Universal Declaration of Human Rights is. Is it a document? Is it a... what exactly is it? Universal Declaration of Human Rights contains basically all aspects of right to life, equal remuneration, gender justice, right of disabled. Environment was not initially included, but it has been included in 1986 in the declaration. It would have been much better had it been included in initial declaration itself. These are the issues on which we have to think globally and act locally. So every country has to make an effort. They are making an effort, and in positive direction, and then that is precisely required. We have to care for the ecology, flora and fauna. So many things are there. You see, this is our fundamental duty in our constitution also, that we have to care for flora and fauna, because our existence is dependent on the how we preserve the nature. Absolutely. And climate. Climatic change is affecting displacement, you see, causing floods, droughts. So many things are dependent upon warming, that loss of employment is taking place, migration is taking place, problems of resettlement is there, issues of patent rights and vaccines and making drugs and medicines available at the affordable price, which are life-saving drugs and medicines and vaccines. All these issues are going to be deliberated upon in this important conference with respect to human rights. Justice Mishra, it's indeed another glorious chapter in the epic called India and the World. You also helped us understand the nuances of the Declaration of Human Rights in a better way. Let us now peep a bit homeward. It is another significant moment as our own National Human Rights Commission completes 30 years of existence. Is it sheer coincidence that it also happens to be 30 years of the Paris Principles? You just mentioned Paris Principles to us. We equally want to understand the spirit and journey of both. Actually, these commissions were established to comply with the Paris Principles. India agreed to Paris Principles. Then there was a requirement to create a statutory body or a body dealing with the human rights. So our act, and there is no conflict in our protection of human rights act and the Paris Principles, you see, these are the same. These are for the purpose of that only. You see, carrying out the Universal Declaration of Human Rights, these institutions have been created throughout the world. For that, there was a consensus to which India agreed. And in the light thereof, this Protection of Human Rights Act has been carved out. There is no conflict between these, and there is no difference between them. And then there is a very important, you see, powers are given to the commissions to work in the field of human rights. It is so much wide that there is general power given in the case of any other violation of human right. Apart from that, what is specially given to visit prisons, to deal with the cases of police excesses if they are encounter, and then other human rights, inaction of the police, non-extension of the benefits of the social welfare schemes, to give opinion to the government with respect to the laws, international treaties and conventions and all that. These powers are with the commission, and luckily we have other commissions, national commissions, as deemed a member for the purpose of policy making. We deal with the complaints individually. So it's heartwarming to see the scientific temper of the growing ambit of human rights with inclusion of environment and climate change, as you just mentioned. It also reminds us of our fundamental duties as enshrined in our constitution. Globally, have even other categories been added in this rather fast-paced world? Have there been further dialogues and discussions in that direction? Actually, with the advent of technology, human rights are is such a subject that its reach and ambit is going to be enlarged each and every day. So there are new problems, there are new facets, there are new aspects
and new ways of protecting it which have to be derived at. To say that child sexual abuse material is too much on cyberspace. Now we have held an international conference on this subject and working on advisory, and it is in the final stages. I feel that those who are intermediaries and in charge of the internet transmissions and all this, loading the contents, and they are earning revenue out of it, they should be made responsible so as to take out the objectionable content and to prevent the offences which are taking place on cyberspace. 96% is a very unfortunate. That's such a useful thing, which internet is so much useful and kept the world together during COVID. Now is being misused for committing various crimes, data hacking, and then right of privacy, e-commerce fraud and banking fraud and all that are taking place. So this is a very serious issue. You see, we have to work and formulate new strategies. Child trafficking is still in vogue. That is a matter of concern. And there are several other issues. Business now, multinationals are coming. You see, we cannot stop them to coming. They should be having responsibility towards the welfare of the country, and they should be, you see, answerable to the activities for which they are doing, and there should be corporate social responsibility also. And I am happy that in India at least we have that section 135 of the Companies Act, in which there is this corporate social responsibility which has been incorporated, in which there are provisions made for service of the poor and for upliftment of that section, and then for providing employment, etc. There are certain categories on which there is social responsibility. They have to work on it. So one term on the agenda comes across as intriguingly novel: business and human rights. You just mentioned a few points about that. Do tell us more about it. I mean, will it be a structured, will you try to deliberate on other, because what happens is when you talk of business and human rights, they somehow, the two words don't seem to converge. If you look at popular perception. Business should be responsible for respecting the human rights. When you are in the activity of the business, you must respect human rights. Even if we go to the extent that consumer rights are also very important. Consumer rights should be protected by the business. In my opinion, the price should have correlation with the cost of production. Considering the transparency and right to know, should be a consumer's right to know the cost of production, and pricing should be such that you earn profit. When you are producing, you earn profit. But how much profit you can earn? And then competitive. Markets should be competitive, not anti-competitive. You cannot form a cartel and fix whatever price you want to fix for a product. That is exploitation and of consumer, which is violation of the human rights, basically. So that all these things have to be protected, preserved, and then developed. There are new challenges which are coming on each and every aspect. Patents are there, which is the evergreening of patent is also taking place. Patents are also for 30 years now, you see. And then when it comes to the balancing the right to life with the patents of vaccines, I had been of this view that when pandemic was there, patents of vaccines should have given the way to the right to life. So many persons would not have died in the entire world, you see. Millions have died. Vaccines were not made available, though India supplied to 101 countries. This is a different story. But you see, if the patents of these life-saving things are continuing even during pandemic also, is a worse situation to face with respect, we say, with right to life. We have to balance these intellectual property rights with the right to life. Chairperson sir, it really touches one to observe how institutional initiatives and interventions go a long way in positively impacting common lives in a special way. As we come to the conclusion of our conversation, any listener rightfully raise an innocent question, even if out of sheer curiosity or otherwise, based on his or her confidence in the Commission and justified expectations from it as well. May I request you to enumerate the latest initiatives on part of NHRC India, that have truly touched human lives in the remotest corners of the land. This could be of benefit to marginalized sections globally, as we understand. Actually, we are working firstly on this food security should be there. With respect to that, we have issued an advisory
that even migrant labor should be provided food, which the government is supplying everywhere. That has been implemented. And then we are trying to reach travel also, digital divide which is there, and amenities which are not available over there. We are ensuring that nothing comes in the way of availing the benefit of social security schemes. And then we are extending that also in various measures and ensuring by interactions also, by advisories also, we are ensuring that. We have taken the initiative with respect to the providing housing to the persons who are shelterless. This government scheme of providing free house. Every day we are issuing several directions to provide the housing to the person who is entitled to it. Several complaints are coming every day of PMAY, Prime Minister Yojana, that it's being delayed. We ensure that their claims are looked into. I am happy to share with you that in Odisha there was one case in which we decided at one go 2,500 cases, and large number of persons were benefited in that exercise in one day only. And there are another matter was there with respect to West Bengal. Around 600 to 700 cases were there of this kind of a scheme, you see. And in that also we ensured that their claims are looked into and the person who is entitled are given the dues of free house. When our team went to Bihar, Oost tragedy, we were directing compensation of 4 lakhs each in every case, 4 to 5 lakhs. I am happy that after our team visited Bihar, not only the government accepted all of our recommendations which were made for payment of compensation those to the persons who have died due to whose tragedy, but they have decided themselves to make the payment of compensation of 4 lakh with effect from 2016. Those whosoever has died, maybe that post-mortem report is not available. So I am happy to share that this is the way in which. And another aspect is that we look into this persons involving stone mining. They suffer with silicosis. When they are suffering with silicosis, Commission asked several state government to formulate a welfare scheme for them to award compensation. I am happy that several state governments have framed a scheme where the persons are suffering with the silicosis or providing them pension or compassionate employment or lump sum compensation, or even they have come up with so many good schemes. So one last question. It's a rather sensitive question. Can the number of complaints being received by NHRC on violations be looked at as a benchmark of sorts? And have there been other ways, formal or informal, through which the Commission has been proactively looking at enhancing outreach in the ever-expanding gamut of human rights? Now we are receiving approximately 400 complaints every day, more than 1 lakh every year. It's a very high number. Now there is a confidence in the people. They are coming to us for this purpose that we are giving speedier justice to them. We do not keep the complaints pending. You see, our pendency of total complaints is approximately 8,000, not more than that. And that too, they are pending only for the purpose of post-mortem reports, etc., which have to be received, and forensic science laboratory reports which are to be received, or they are fresh cases. We are asking the authorities to act immediately. We are granting, there is no fees payable on the complaint. Simply you write a letter online, and then it is between us and the government. We act on behalf of the complainant and ensure that whatever relief they are entitled, it is given, and there is no violation of their rights. That's our purpose. I feel that everybody should be aware of their rights, and then they should be aware that we are there as a friend and support them in all their causes. This has truly been an enlightening discussion. With due regards to champions of human rights across the world, I take this opportunity to express gratitude to respected Chairperson, National Human Rights Commission, Justice Arun Mishra, for taking out time for the sake of our listeners and also stakeholders in the grand event, the Conference of National Human Rights Institutions of the Asia-Pacific region, to be held in New Delhi. This is Manoj Mainkar signing off. Thank you. Namaskar. Thank you. In connection with the 28th Annual General Meeting and Biennial Conference of National Human Rights Institutions to be held in New Delhi,
You were listening to an interview with Chairman, National Human Rights Commission, India, Honorable Justice Arun Mishra. The interviewers were Manoj Mainkar in English and Nisha Bharadwaj in Hindi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.